Sarak par padiyint. Soft, eerie music plays in the background. A calm yet mysterious voice speaks. English. It was just an ordinary afternoon in Eldenbrook, or so it seemed. Liam was walking home when he saw it, an old weathered brick lying in the middle of the road. Hindi, वो एक साधारण दोपहर थी, या शायद नहीं. लियम घर जा रहा था जब उसकी नजर पड़ी सड़क के बीचों बीच एक पुरानी और हस्किमी ईंट रखी थी. Sound of footsteps stopping, wind blowing softly, suspense builds up. English, something about it felt strange. The brick wasn't like any other. It had symbols carved into it, symbols that seemed to move when he looked closely. Hindi, उसमें कुछ अजीब था, वो ईंट साधारण नहीं थी, उस पर अजीबोगरीब निशान बने थे, और जब उसने ध्यान से देखा तो वो निशान जैसे हिल रहे थे. Heartbeat sound, soft glowing sound as Liam touches the brick, then whoosh, the world changes. The moment he touched it, everything around him blurred. The town vanished. He was standing on an ancient cobblestone path, leading to a massive golden gate. जैसे ही उसने उसे छुआ, सब कुछ धुंधला हो गया. वो अपने शहर से कहीं दूर था. उसके सामने थी एक प्राचीन पत्थरों की सड़क, जो एक विशाल सुनहरे दरवाजे तक जाती थी. A deep echoing voice speaks, mysterious and powerful. You have found the lost piece of the forgotten road. Will you complete its journey? तुमने खोई हुई सड़क का टुकड़ा पा लिया है. क्या तुम इसकी यात्रा पूरी करोगे? Music intensifies, the wind howls, distant footsteps are heard approaching. English, Liam's heart pounded. What journey? What was this place? But before he could think, he heard them. Dark figures were coming, and they wanted the brick back. लियम का दिल जोर से धड़क उठा. कौन सी यात्रा? ये जगह क्या थी? लेकिन सोचने से पहले उसने सुना. काले साये उसकी तरफ बढ़ रहे थे, और उन्हें वो ईंट वापस चाहिए थी. On of heavy footsteps approaching, whispering voices, Liam gasping in fear, then silence. To be continued.